Hello students, welcome to our next video of class 7 history chapter 10 18th century political formations. Students, in this video we will discuss about the old Mughal provinces, Hyderabad, Awadh, Bengal and the Watan Jagirs of the Rajput. Well, let's start. Old Mughal provinces. Students, as you know that with the decline of the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, subadars and the great jamidars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Through the 18th century, the Mughal empire gradually fragmented into a number of independent regional states, and these states can be divided into three categories. The first category of those states that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad, although extremely powerful and quite independent, but the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal emperor. And in this video, we will discuss about old Mughal provinces, which were Awadh, Bengal and Hyderabad. Students, in the given map, you can see the locations of Awadh, Bengal and Hyderabad. बच्चों, पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से तीन प्रमुख राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान, जो कि अवध का संस्थापक था, मुर्शिद कुली खान बंगाल और आसफ जाह हैदराबाद के संस्थापक, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6000 था। Students, now come to the next topic, Hyderabad. So first of all, I would like to tell you is that Nizamul Mulk Asaf Jah was the founder of Hyderabad state. He was one of the most powerful members at the court of the Mughal Emperor Farrukh Shah. He was entrusted first with the governorship of Awadh and later given the charge of the Deccan. As the Mughal governor of the Deccan province during 1720-22, Asaf Jah had already gained control over its political and financial administration. Asaf Jah brought skilled soldiers and administrators from the northern India who welcomed the new opportunities in the south. He appointed mansabdars and granted them jagirs. Although he was still a servant of the Mughal emperor, he ruled quite independently without seeking any direction from the Delhi or facing any interference. The Mughal emperors morally confirmed the decisions already taken by Nizamul Mulk Asaf Jah. बच्चों, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों से युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। Now come to the next topic, Awadh. Sadat Khan was appointed Subadar of Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire. Awadh was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. Students, Sadat Khan also held the combined offices of the Subadari, Diwani and Faujdari. In other words, he was responsible for the managing the political, financial and military affairs of the province of Awadh. Burhanul Mulk tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders or jagirdars appointed by Mughals. He also reduced the size of Jagir and appointed his own loyal servants to the vacant positions. बच्चों, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था।
इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम की भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बंगाल। बच्चों, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। Students, the formation of a regional state in the 18th century Bengal therefore led to considerable change amongst the zamindars. The close connection between the state and the bankers, noticeable in Hyderabad and Awadh as well, was evident in Bengal under the rule of Alivardi Khan. Students, during Alivardi Khan's reign, the banking house of Jagat Seth became extremely powerful. Now come to the next topic, वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। बच्चों, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं सदी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान इन विच you can see Jaipur, Amber, Ranthambore, Chittorgarh, Kumbhalgarh, Jodhpur, Jaisalmer, etc. Students, Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat and Sawai Raja Jai Singh of Amber was governor of Malwa. These offices were renewed by Emperor Jahadar Shah in 1713. They also tried to extend their territories by seizing portions of imperial territories neighboring their watans. Nagaur was conquered and annexed to the house of Jodhpur, while Amber seized large portions of Bundi. Sawai Raja Jai Singh founded his new capital at Jaipur and was given the Subadari of Agra in 1722. Maratha campaigns into Rajasthan from the 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion. Now, let's rewind what we have learned. The regional states Hyderabad, Awadh and Bengal were powerful but did not formally break from Mughal Empire. Hyderabad state was founded by Nizamul Mulk Asaf Jah. The state of Awadh was founded by Burhanul Mulk Sadat Khan in 1722. Murshid Quli Khan took the control of Bengal and began to command the revenue administration of the state. Students, now I will ask some questions to you based on today's topic. Your first question is, Murshid Quli Khan founded dash, and your options are A. Bengal, B. Afghan, C. Hyderabad, D. Awadh. And your right answer is option A, Bengal. Your second question is, dash,
was the founder of Awadh? And your options are A. Sadat Khan, B. Murshid Quli Khan, C. Ibrahim, D. Jai Singh. And your right answer is option A. Sadat Khan. Your third question is Sawai Raja Jai Singh founded his capital at dash. And your options are A. Awadh, B. Agra, C. Jaipur, D. Lucknow. And your right answer is option C. Jaipur. Your fourth question is Jagat Seth became prosperous during the reign of dash. And your options are A. Sadat Khan, B. Murshid Quli Khan, C. Alivardi Khan, D. Asaf Jah. And your right answer is option C. Alivardi Khan. Students, these are the some of the questions for your homework. Students, we will present soon with the next video. Thank you.